All right, so today's paper is June 24, variant 21. The 21 and 23 variant are important, so make sure that you see how they are answered. Okay, so for the case study, अच्छा case study है, relevant case study है, obviously, because this paper came in 24, so 2022, 2023 तक का जो है data is provided. Right, 23 का दिया हुआ है और ये 24 में आया है. So this paper was actually uh, just 1 year before data उठाया हुआ है. So that's much more recent. There's no 2 year वाला gap which normally that they followed. कहते हैं will an increase in export lead Sri Lanka back into economic growth? By the way, those of you who don't know, Sri Lanka a few years back almost defaulted. Actually, it did default, and it had one of the most serious problems. Dollars were short. Um, so, so basically, then they needed the bailout. They went to IMF. They went to India. India usually bails them out most of the time. I think the government was of Rajapaksa and his family. So for the very longest time, Rajapaksa's family had been ruling, and they do say that it's a very corrupt, but at the same time, you have a very learned population in Sri Lanka. They sell tea. They're known for tea mostly. They do have textile, but tea is their major exports. Tourism is also one of those, right? So what are we talking about here? देखते हैं. So कहते हैं in May 2022, Sri Lanka had to admit that it was unable to pay its international debts to other countries for the first time in its history. So as a result, in February 2023, it was forced to obtain a loan of 3 billion from the IMF. Now, when you're not able to raise money and you have trouble, usually, like I said, India used to bail them out all the time. That's why they never went to the IMF before. But this time they had to go to IMF. When you go to IMF, obviously IMF has some conditions that you have to meet, right? But if you refuse to do that, then IMF is not willing to give you money. Then you will have to look at other sources. From what I know, I think they did not take money from IMF, but maybe they did. The question is now, can Sri Lanka trade its way out of trouble? The main problem faced by Sri Lanka for many years have been a lack of international competitiveness. In what industries they're not telling, but you know, they've not been producing international standard products as such at a competitive rates and quality probably. Despite a growth in exports between 2000 and 2018, so 18 saal mein, over the same period, they fell as a share of the economy from 39 to 23% of GDP. Basically, आप क्या हिसाब लगाते हो कि आपका जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो अगर आपकी कंट्री की एक सर्टेन जीडीपी है, तो आप देखते हैं कि उस जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा आप एक्सपोर्ट से कमाते हैं. यू रिमेंबर जीडीपी इज इक्वल्स टू या एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. So this export is that revenue of export, right? So they're suggesting, they're saying that 39 से 23% पे चला गया of the GDP, so the share has reduced. So as a result, the country has found itself to earn enough is unable to earn enough uh, currency to pay for essential imports like fuel and food. So I guess more important stuff is coming from there. फिर वो नीचे आपको एक टेबल देते हैं. टेबल को पढ़ना आना बहुत जरूरी है. इसे श्रीलंका का बैलेंस ऑफ ट्रेड है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज मिला हुआ है. सो इफ यू रिमेंबर करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर, राइट? तो अब इसके अंदर जनवरी, मार्च,
मई जुलाई दो दो महीने का है. If you look at the numbers, you have a negative 858. That's a deficit. More exports, less imports. That's what this negative means. The deficit is reducing. That's a good thing. But then the deficit starts to go up again. So there is a minor drop, right? So for many years, Sri Lanka has enjoyed a comparative advantage in growing and exporting tea. However, the ban on import of fertilizers in 2021, which cut yield by a fifth. All right, so one fifth of the yield has cut down, and over reliance on outdated method of production have had a disastrous impact. In fact, I have something to tell you about over here. Before this massive food issue happened with them, so उससे पहले क्या हुआ था, couple of years before, obviously they were going through the deficit का problem, like you can see over here. ये deficit का problem had been there. So Rajapaksa and his team basically, क्योंकि उनको import कट डाउन करना था ना, import के bills कट डाउन करने थे, because they did not have the money, so they decided कि हम fertilizers की import भी बंद करेंगे. फर्टिलाइजर आपके एग्रीकल्चर का एक बहुत essential you could say is an essential raw material. So there was one of these, I think Al Jazeera या किसी के ऊपर, I saw this documentary where they were interviewing the farmers, and the farmers said that this is what they're doing, and they're telling us कि organic बनाओ, you know, organic is good, organic sells and everything. But then the farmers said that they don't realize that organic takes too much time, and we cannot give such a big supply shock to the food industry. But obviously, probably from the government's point of view, they did not have the money to import fertilizer and all of that. So they sort of like spinned it by saying कि organic की तरफ जाना चाहिए हमको. Organic time भी लगाता है produce करने में, और उसकी yield भी कम होती है. But then the farmers also said that this is not good for the future, because future के अंदर हम कम बनाएंगे, and then it's going to create a bigger issue, and that's exactly what happened, right? Another major export is textile, but they rely heavily on import raw materials that have rapidly increased in price following the COVID pandemic and the conflict of Ukraine. I think we're all aware of that. दो मसले बताए हैं इधर. So what alternative exists for Sri Lanka? साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भाई, अनलाइक अदर एशियन नेशन, श्रीलंका जो है, नजर नहीं आ रहा कि कोई और नया कंपैरेटिव एडवांटेज ढूंढे. दे ऑलरेडी हैड कंपैरेटिव एडवांटेज इन टी, बट कोई नया नहीं. बाकी एशियन नेशंस जो है नए कंपैरेटिव एडवांटेज पे काम कर रहे हैं, इन्होंने नहीं किया. But probably the most likely option would appear is that कि अगर आप वर्ल्ड मैप देखें, तो उसके अंदर जो कंट्रीज का स्प्रेड आता है, उसमें श्रीलंका इज राइट बिलो इंडिया, और बेसिकली इट्स अ मेजर शिपिंग रूट. तो वहां पर अगर कोई एक हम पोर्ट्स वगैरह डेवलप करके, जो बेसिकली आईएमएफ ने भी किया हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट देयर इज अ वेरी strange name of the port, hum Humbatuta or something like that, a strange name like that. But there is what CPEC type का ये एक project श्रीलंका में भी हुआ था. वहां पे उन्होंने airports and ports and everything had been constructed, because future की वो बहुत एक chain का important है, तो मे बी. लेकिन बाय द वे, वो वाला भी जो शिपिंग है, इन्होंने वो पोर्ट वगैरह भी चाइना को बेच दिया है, बिकॉज दे डिड नॉट हैव द मनी फॉर इट. So, for approximately a third of the world's oil is transported across the Indian Ocean. So, वो बहुत important point बनता आपका. Uh, Other options include allowing the Sri Lankan rupee to depreciate to boost export. I think you're well aware of that, because it is felt that the currency is overvalued. जबरदस्ती उसको ऊपर रखा हुआ है. ठीक है. देर आर ऑल्सो सजेशंस दैट ऑल इम्पोर्ट टैरिफ शुड बी रिमूव्ड. अब हमें पता है कि रिमोट इम्पोर्ट टैरिफ हटाओगे तो एकदम से कंपटीशन आ जाएगा, और आपकी लोकल इंडस्ट्री सफर करेगी. तो मे बी यू नीड टू प्रोटेक्ट दोज, राइट? So Sri Lanka is currently one of the most protected economies in the world, and removing tariff may help attract.
much needed foreign investment and encourage local industries to become more efficient. टैरिफ हटाओगे, कंपटीशन आएगा, तो बाहर से फर्म्स भी आएंगी और लोकल फर्म्स भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे. So the question now is, could the introduction of these options lead Sri Lanka back into economic growth? चले जी बात करते हैं. So first question says, identify the overall trends in the Sri Lanka's balance of trade of goods and services between January 22 to January. ओवरऑल ट्रेंड पूछा है सिर्फ एक मार्क का. सो ओवरऑल ट्रेंड क्या है भाई? ये था और ये हो गया है. तो ओवरऑल जो है, जो आपका ट्रेड बैलेंस है उसके अंदर, तो we're looking at an improvement. So I can say that there is overall there is an improvement. Deficit के अंदर I could say that it is still in deficit, but there has been an improvement. So I think the mark that you're going to get is one, that there is a trade, या a falling, एक ही तीन अल्फाज में ये हो जाएगा, फॉलिंग ट्रेड डेफिसिट. तुमको पूरे मार्क मिल जाएंगे ये दो वर्ड लिखने के ऊपर. वैसे तो एक मार्क का है. आई थिंक बोथ ऑफ दीज वर्ड्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इट हैज फॉलन, डिक्रीज, व्हाटएवर यू वांट टू से. फिर उसके बाद कहते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन श्रीलंका's बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन जनवरी 2022 टू जनवरी 2023. चलें जी, परसेंटेज उसने बोला है. हम तो वैसे ही आदत है हमारी निकालने की परसेंटेज. तो भाई आपका नंबर है, ठीक, बल्कि लेट मी जस्ट इग्नोर, डिफरेंस कर लेते हैं ना. सो न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100, परसेंटेज निकालते हैं ना. So let me see what this is. Let me calculate. You can do it on your own also. So 410 minus 858 divided by 858 into 100. 52.2, right? I'm getting 52.2%. ठीक है? So that's fine. Please make sure negative का साइन आएगा. बहुत जरूरी है नेगेटिव का साइन. So you have a negative 52.2%. Although marking scheme, I believe says, a second, let me show. Marking scheme says the deficit has fallen by 52%. Okay. So because it's a one mark question, make sure that ऊपर तो वैसे हमने बता ही दिया है, but just negative में ही लिखो. You have a deficit. Let me show you. Deficit has fallen by 52%. Right here. The answer must refer to the trade deficit and the fact that it has fallen for the first mark, except answer in the range of 51 to 53. So 52.2 is the precise number. Then the deficit has fallen. मेरे नजर में तो बस सही है, done है. Explain what is meant by Sri Lanka has enjoyed a comparative advantage in growing and exporting tea. I hope you remember what comparative advantage is. I've shared something with you today also, the glossary. To make sure that वहाँ अच्छे से अपनी words और उसकी terminologies practice कर लो. Out of 60, 10 marks तो तुम्हारे knowledge understanding के पेपर में निकल आएंगे. तो 10 हो गया, फिर 10 13 14 मार्क ही उठाने हैं उसके बाद बाकी बहुत सारे में से. So I think that would be one good strategy also. Worst case strategy. All right. So what is meant by Sri Lanka has enjoyed? So what it means is कि अगर उनका comparative advantage है, तो that means कि they are able to produce at lower opportunity cost. मेरी ख्याल के अंदर तो you should also write that they're getting lower opportunity cost because of the factor endowment. You know, we've been writing this because of the factor endowments. What does that mean? What it means is because of the country's factors of production, the country can produce at lower opportunity cost.
कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो आई थिंक ये कंपैरिजन कर लिया करो जस्ट इन केस ना, चीजों के अंदर में नीडेड टू बी। फिर उसके बाद consider the extent to which depreciation of the Sri Lankan rupee could improve the country's balance of trade। 14 मार्क का है। I've already told you, I think तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा what I've told you। 4 मार्क्स सब एक ही साइड पे नहीं मिल सकते। You have to make an evaluation, you have to make a counter argument। Depreciation से कैसे होता है? I have a feeling that I've been talking about this for some time now, it's an important thing for this year also। When your currency depreciates, they want you to make a connection कि trade balance somehow will get improved। तो पहली चीज तो I think what we should write is that the price of export is going to go down as a result of this, right? And the price of imports is going to go up as a result of this। This will lead to a rise in the export revenue and a fall in the import expenditure। Overall, x minus m के अंदर we're going to see an improvement। So therefore, I will not say that the trade balance will go into surplus। I will not say that because I don't know if it's going to go in the surplus. But what I'm going to say is that it will uh, improve, right? So trade balance will improve। डन हो गई हमारी बात? All right, excellent। So once we have this, उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट। आई टोल्ड यू मेनी मेनी टाइम्स, जब भी ये वाला डिस्कशन होता है तो आप इलास्टिसिटी को बीच में लेकर आएंगे। दैट वुड बी योर evaluative statement। Your evaluative statement is that when these prices change, the impact on the trade balance will depend on the price elasticity of demand for exports and price elasticity of demand for imports। I would like you to give a brief explanation of this। Your explanation should be uh, about the idea that अगर आपका पीडी, बिकॉज मैंने काउंटर करना है ना, तो इम्प्रूव नहीं होगा, मैंने ये बताना है कि इम्प्रूव नहीं होगा। तो अगर आपकी ये दोनों इलास्टिसिटीज लेस देन 1 है, यानी इन इलास्टिक है, तो जो परसेंटेज एक्सपोर्ट के अंदर, अगर पीडी फॉर एक्सपोर्ट इज लेस देन 1, तो जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट है, राइट, सो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्सपोर्ट्स के अंदर जो इंक्रीज आएगा वो कम है कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, जो फॉल है। तो एज अ रिजल्ट ओवरऑल आपका जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो राइज नहीं करेगा, बल्कि इनफैक्ट वो गिर जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से तुम इंपोर्ट की भी बात लिख सकते हो, एंड दैट विल बेसिकली विल बी इनफ। Can you write about the J curve effect? J curve is not part of your course, but if you want to write, again, you must talk about the elasticity। Honestly, we as examiners were looking for कई इसी तरह से तुम कोई इलास्टिक इन इलास्टिक के थ्रू जो है ना काउंटर कर दो, ठीक है, दैट नो इट विल नॉट फॉल एंड द ट्रेड बैलेंस विल नॉट improve। जस्ट सिंपली स्टेटिंग द फैक्ट दैट whether the trade balance will improve or not is dependent on the price elasticity of demand for exports and imports। और जान छुड़ा ली, नहीं मिलेगा मार्क। ठीक है जी, मैं तो नहीं दूंगा। यू मस्ट एटलीस्ट थोड़ी सी इसके ऊपर मुझे एक्सप्लेनेशन जरूर दो। फिर उसके बाद आ जाते हैं नंबर डी पे। डी पे क्या हो रहा है? सॉरी, लेटर डी।
Assess whether the removal of all protectionism is likely to reduce the balance of trade deficit. Assess whether, obviously, we have to write two-sided arguments. क्या वो आपका trade balance जो है, will it reduce? There might be a mark for it, there might not be. Please make a habit. Protectionism को समझाओ. Protectionism is when the country tries to protect the domestic firms against the foreign competition through price competitiveness, through increasing price competitiveness. Okay, we've talked about this plenty of times before. You want to remove. So basically, the question is about advantage and disadvantage. Okay, that's what this question is about. If you remove protectionism, will it? अब मुझे मैं जो भी लिखूंगा ना, आई नीड टू मेक अ कनेक्शन. मैं वो वाले रीजंस नहीं लिख सकता जो ट्रेड बैलेंस पे लीड ना होते हों. ये जो मेरा एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट का प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए थ्रू द रिमूवल ऑफ टैरिफ. ठीक हो गया. सो भाई, जब आप प्रोटेक्शनिज्म हटाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? तो योर आर्ग्यूमेंट शुड बी, प्रोटेक्शनिज्म हटाने से बाहर से जो कंपटीशन आता है, कंपटीशन आने की वजह से इंपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगे. इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो डेफिसिट तो वर्स ऑफ हो जाएगा. ये तो मेरा एडवांटेज नहीं बता रहा. तो मैंने क्या करना है? मैंने इसको किसी तरह से स्पिन करना है. ऊपर आर्टिकल के अंदर भी उन्होंने तुम्हें रीजन दिया है एक तरीके से. इफ यू नोटिस, उन्होंने बात की है इसकी कि देखें जी, अगर आप हटा देते हैं टैरिफ तो उसकी वजह से एक तो नंबर वन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और दूसरा लोकल फर्म्स एफिशिएंट हो जाएंगी. तुम्हें दो उन्होंने एडवांटेजेस बता ही दिए हैं एक्चुअली. ठीक है. तो हमने क्या करना है? हमने तो सीधा सीधा उसको एक्सपैंड करना है. किस तरह से? भाई, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी इनटू डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, that will improve domestic firms' efficiency, और उसकी वजह से chances are that we might start exporting and imports might reduce because domestically ये चीजें बन रही है. ठीक हो गया. एक और चीज आप क्या लिख सकते हैं, अगर वही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुमको करना है कि फॉरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब टैरिफ नहीं होगा तो जब बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लेकिन जब कंपटीशन आएगा, competition will force firms to become competitive. दोनों पॉइंट वैसे तो competitive की तरफ ही जा रहे हैं. तो if you want to talk about something other than competitive, तो आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो इंपोर्ट टैरिफ रिमूव करने से डंपिंग डंपिंग किस तरीके से रुक सकती है? तो अगर आपने फॉरेन कंपनीज पे से टैरिफ हटा दिए, आई डोंट नो, I can only think of it somehow domestic firms are going to become competitive. That's all I can think of right now. But अगर आप टैरिफ रखते हैं तो द काउंटर आर्ग्यूमेंट इज भाई नहीं हटाएं. ठीक है. तो अगर आप रिमूव, wait 1 second, am I misunderstanding the question here? Assess whether the removal of all protectionism is likely to reduce the possible advantages of retaining tariff.
तो रिमूवल के एडवांटेजेस एंड कीपिंग के एडवांटेजेस. That's how the marking scheme is telling me that this is what you were supposed to do. Possible advantages of retaining and possible advantages of removing. So ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है. So this is not advantage and disadvantage. This is about advantage of removing. Oh, sorry, my bad. Of removing and advantage of retaining. Okay. तो अगर आप टैरिफ रखते हैं तो आपकी बहुत सारी बातें हैं. आपकी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट हो जाएंगी, उनको एक टाइम मिल जाएगा. ओके. फिर सेकेंडली यहाँ पे अप्लाई होता है ये, डंपिंग रुक जाएगी. राइट. उसके अलावा इन्फेंट इंडस्ट्रीज की हम एक बात करते थे, इन्फेंट इंडस्ट्रीज जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी. टाइम टू डेवलप. Right? So that can be written over here. Right? So what we have over here is foreign investments into developing industries will improve domestic firms' efficiency, your exports will rise and imports will fall. दूसरे एंड के ऊपर competition firms uh, will force firms to become competitive is what I'm suggesting. ठीक है. फिर जब आप रिमूव करेंगे तो एक ये भी अच्छी बात है कि रिटेलिएशन नहीं होगी. नंबर 3, रिड्यूस रिड्यूस रिस्क ऑफ रिटेलिएशन. रिटेलिएशन से क्या होता है? रिटेलिएशन से आपके एक्सपोर्ट्स हर्ट होते हैं. सो इफ एक्सपोर्ट्स हर्ट होंगे, एक्सपोर्ट्स फॉल, और उससे आपका जो है डेफिसिट और वर्स होता है. अब जहां तक इवैल्यूएशन की बात है ओवर हियर, वेदर यू शुड कीप और वेदर यू शुड रिमूव, मेरी नजर के अंदर व्हाट वी शुड हैव इज एटलीस्ट फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमी वेयर यू हैव lots and lots of infant industries. I think the suggestion is that in the short run you can keep uh, barriers, right, and then slowly reduce it with plan to remove it. I think this is the idea. लॉन्ग रन में नहीं होना चाहिए, शॉर्ट रन में प्रोटेक्शन जरूरी है. राइट. तो शॉर्ट रन के अंदर आप रहने दें उसको, डोंट टेक इट आउट. राइट. फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आफ्टर योर इवेल्युएशन. Assess the extent to which supply side policy will be able to lead Sri Lanka back into economic growth. Supply side policy की for and against argument basically. तो आपको पता है कि जब हम सप्लाई साइड की बात करते हैं तो हम एग्रीगेट सप्लाई करने की बात करते हैं. उसके कुछ ऑब्वियसली एडवांटेजेस हैं. जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो वन ऑफ द वेज थ्रू विच वी वांट टू हैव is we say investment in education and skilled labor. You do deregulation. Uh, so better trained and educated workforce. That's one advantage. Obviously, result क्या होगा? They will be more productive. Okay. So that's an explanation. When they are more productive,
What's going to happen? Our GDP is going to go up, our employment is going to rise. So all good things is going to happen as a result of that because we want to bring it back into economic growth. So maybe this will lead to that. ठीक है. ड्रॉबैक्स के अंदर, राइट, फ्रॉम द नेगेटिव साइड, हमने पहले भी बात की है कि एक तो देर इज कॉस्ट इन्वॉल्व, there is a time lag का issue. That means that they are more effective in the long run. फिर हमने ये बात भी की है कि जब आप लोगों को एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो is it really helping our economy? Because many times your workers just basically leave the economy, right? How many marks देखें जी, 6 मार्क का क्वेश्चन है. You have to do a counter argument. You're going to get two for an explanation over here. You're going to get two for an explanation over here. अब आप कॉस्ट की बात करें या टाइम लैग की बात करें, you just have to explain the idea. You get yourself your 2 marks because there is an evaluation that needs to be talked about. That आपने दोनों साइडों को देखना है. So in evaluation, supply side policy has both the benefits through educated workforce, higher productivity. However, there is an issue of time lag and the cost and opportunity cost that the government has to see. So यहाँ पर जो है, we would suggest like a mixed policy where you could do some short-term demand side policies and long-term supply side policies so that the results are for both short run and long run. ठीक है, सिर्फ supply side policy in itself might take long. अच्छा, यहाँ पे ये भी आप बात कर सकते हैं कि देखें, जब आप सप्लाई साइड पॉलिसीज करते हैं तो शॉर्ट एजुकेशन और ट्रेनिंग में जब आप स्पेंडिंग करेंगे, तो ये सप्लाई साइड शॉर्ट रन में एडी को बढ़ा के भी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएगा. तो इट माइट बी इफेक्टिव इन द शॉर्ट रन, और लॉन्ग रन के अंदर तो ऑब्वियसली वो एग्रीगेट सप्लाई को भी इंक्रीज करेगा. ये हम बात करते हैं व्हेन देयर इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग towards education and healthcare and all of these things. तो गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है ना, स्कूलें बना रही है, वर्कर्स को सैलरीज दे रही है. तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, ये टेम्पररी एडी फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है, और फिर लॉन्ग रन में सप्लाई साइड को भी अफेक्ट करती है. तो इट कैन एक्चुअली हैव बोथ द इफेक्ट्स. तो आई वुड से दैट for evaluative purposes, after just suggesting about the benefits and the drawbacks, I can lead to a conclusion that it can actually do both. Short run में AD भी बढ़ा सकती है और long run में AS भी बढ़ा सकती है. ठीक हो गया. So that would be our case. Okay जी, moving on. Then we have an essay. Um, So our first question, with the use of examples, explain the difference between a public good and merit good and consider whether markets will always provide enough of both goods. I think we've done plenty of questions similar to this, so I won't talk much about it. But what I want to say in this one specifically is please, 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 like for example, let me give you a rough idea what is necessary in your answer. How would I grade this? So imagine like I have this answer which has been written. So अब मैंने कैसे इसका mark मैं कैसे दूंगा? I'll tell you exactly how I will do this. So based on the question, again, let me bring the question up also ताकि हम साथ लेके चल सकें. Yeah, all right. So with the use of examples, explain the difference between public and merit goods. ठीक है, पहले 3 marks, knowledge and understanding. Public goods and merit goods have different characteristics. Public goods such as national defense and street lights are non-rivalrous, which means that one person use does not reduce availability for others, and non-excludable individuals cannot be prevented from using. That's a tick because this is there and
this is there with its explanation. That's one tick. Public good, नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल, और ये क्या होते हैं नॉन राइवलरस नॉन एक्सक्लूडेबल, क्या मतलब है? एक मार्क। ठीक है। फिर उसके बाद दिस मीन्स प्राइवेट फर्म स्ट्रगल टू चार्ज यूजर्स मेकिंग प्रॉफिट डिफिकल्ट, दैट्स फाइन, दैट्स ऑल एडेड इंफॉर्मेशन। नॉलेज के कोई मार्क्स नहीं है उस स्टेटमेंट पे। मेरिट गुड लाइक एजुकेशन, तो चलो जी 2 मार्क हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि मैं हाईलाइट करूंगा, मैं कहूंगा एक एग्जाम्पल इसका दे दिया, एक एग्जाम्पल इसका दे दिया। आई पुट अ टिक अप हियर, ये सेकंड मार्क हो गया तुम्हारा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग का। एंड आर कंसिडर टू बी बेटर फॉर इंडिविजुअल्स देन दे रियलाइज, रियलाइज पे मार्क नहीं मिलेगा। एंड आर अंडर कंज्यूम्ड इन द फ्री मार्केट ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर। ये दोनों बातों का लिखा होना जरूरी है अगर तुमको मार्क्स चाहिए। तुमने अगर इंफॉर्मेशन फेलियर नहीं यूज किया, और या तुमने इंफॉर्मेशन फेलियर की बात की है बट अंडर कंज्यूम नहीं लिखा, मार्क गया। तो बेसिकली ये हो गया तुम्हारा तीसरा मार्क। ये मेरिट की डेफिनेशन भी एक्यूरेट है। 3 मार्क हो गए पूरे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को फर्दर देखते हुए, दैट कंसिडर वेदर मार्केट्स विल ऑलवेज प्रोवाइड इनफ ऑफ बोथ गुड्स। तो भाई मार्केट तो हमें पता है कि नहीं प्रोवाइड करेगी, एंड आई होप यू रिमेंबर द होल फ्री राइडर डिस्कशन। तो बच्चा लिखता है, इन अ मार्केट इकोनॉमी बोथ पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स टेंड टू बी अंडर प्रोवाइडेड। सच बात है। पब्लिक गुड्स तो है ही नहीं प्रोवाइड, और मेरिट में अंडर प्रोडक्शन है। सो इन अ वे आई कैन से कि दोनों गुड्स की अंडर प्रोविजनिंग है। व्हाई? बिकॉज फर्म्स लैक द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस देम। फॉर पब्लिक गुड द फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइजेस सिंस पीपल are benefit without, they can benefit without paying, firms cannot generate revenue। इसको इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि कोई प्राइवेट फर्म इसको नेशनल डिफेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि वंस इट इज प्रोवाइडेड नोबडी कैन बी स्टॉप। फिनोमिनल, मैं 2 मार्क देने को तैयार हूं इस बात के ऊपर, वेल एक्सप्लेन्ड के ऊपर। तो तुम्हारे एनालिसिस के 3 में से 2 मार्क तो इधर ही मैं दे दूंगा। फिर with merit goods such a private goods, so private education or healthcare demand may fall below the socially optimum level, because consumers do not always fully appreciate, and they might not be able to afford। तो मेरी नजर में तो बात हो गई है। A mixed economy, however, may provide more of these goods through government subsidies, direct provisioning, or regulations। तो एनालिसिस के अंदर बेसिकली this, along with the government interventions of trying to provide and all, that will be my 1 mark। तो 2 मार्क आपके इधर मैंने दे दिए, द होल फ्री राइडर की एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस के अंदर मेरिट की डिस्कशन, और फिर उसका कि मिक्स्ड के अंदर जो है ये दोनों गुड्स जो है गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड हो सकती है। फाइनली then the kid goes on and say, because question में क्या करना था हमें, evaluate क्या करना है? Market will always provide enough of, consider whether market will always provide enough of both। देखें जी, हमें पता है मार्केट अच्छा खासा रीजनेबल प्रोविजंस तो कर ही देती है। ठीक है, जहां पैसे कमा सके वहां तक तो एटलीस्ट, राइट। लिखते हैं, while government involvement can help address the under-provisioning of public and merit good, it does not guarantee full provision. In developed countries, government may successfully fund because, developed countries के अंदर they have the money to do it. Their institutions are much more stronger. Uh, Moreover, political priorities, inefficiencies or corruption may result in uneven or inadequate provision। के मुल्क है भी रिच है, लेकिन स्टिल जो है गवर्नमेंट अपनी ब्यूरोक्रेसी की वजह से माइट नॉट बी एबल टू प्रोवाइड। डेवलपिंग के अंदर खास तौर पे, डेवलप्ड में तो आई थिंक काफी हद तक पब्लिक गुड्स और मेरिट भी अच्छा खासे प्रोवाइड होते हैं। डेवलपिंग के अंदर आई सी अ प्रॉब्लम। तो एवेल्युएशन में मैं डेवलप्ड और डेवलपिंग में डिफरेंस क्रिएट करूंगा, एट द एंड ऑफ द डे दोनों में मार्केट्स हैं, लेकिन एक तरफ जो है इंसेंटिव बेहतर है, फंड ज्यादा है,
एक तरफ there is less will. So in conclusion, markets on their own will not provide. सही है, so always को मैं आंसर कर रहा हूँ, will not always provide enough of either public or merit due to absence of profit incentives. Honestly, इतना भी काफी है, काफी सारा लिखा है बच्चे ने, मैं इससे पहले ही मार्क्स दे दूंगा. दिस इज 8 out of 8 आंसर बेसिकली. ठीक हो गया. इट्स एक्चुअली मोर देन 8 out of 8, बट मार्क्स पूरे हो रहे हैं. वेरी हैप्पी टू गिव देम फुल मार्क्स. Assess whether a planned economic system should always switch to a mixed economy. So, you know the drill, right? First, you talk about the advantages of planned, then you talk about the disadvantages of planned, you talk about the advantages of mixed, maybe some limitations of mixed, and then you give your final evaluation. I think they should move towards mixed. अब बात यह है कि how mixed, right? That would be your evaluative discussion. तो भाई प्लांट के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात हो जाए. हमें पता है प्लांट की कुछ अच्छी बातें. प्लांट में रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं. जस्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के थोड़े से मार्क्स दे देते हैं कि यहाँ पे जो है जी पब्लिक सेक्टर है और वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है. एटलीस्ट एजेंडा तो यही है बोलने वाला. ठीक है. और साथ ही में जो है वो पब्लिक गुड्स भी प्रोवाइड कर देंगे, और जो मेरिट का इशू है मेरिट गुड्स भी प्रोवाइड कर देंगे. ठीक. तो इट्स पब्लिक सेक्टर, रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. फिर आपके पास मिक्स्ड है. मिक्स के बड़ा ख्याल से एक्सप्लेन करना. मिक्स के अंदर दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर होते हैं, राइट. और प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, राइट. और अच्छा कंपटीशन होता है. कंपटीशन की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर का साइड है, प्राइवेट सेक्टर की मैं साइड कर रहा हूँ, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. कंपटीशन है जिससे प्राइस भी गिर जाती है, कंपेटिटिव होती हैं प्राइसेस, और क्वालिटी भी अच्छी बना सकते हैं, राइट. और जो पब्लिक है, पब्लिक के भी तो एडवांटेजेस है ना, कि पब्लिक जो है वो आके खुद प्रोविजनिंग भी कर सकती है. डायरेक्ट प्रोविजन कहते हैं उसको, डायरेक्ट प्रोविजन भी कर सकती है. और इनडायरेक्टली जो है वो सब्सिडीज वगैरह देकर भी ये शॉर्टफॉल के मसले हल कर सकती है. ठीक. तो ये हमारे पास आ गया. थोड़े से प्लांट के डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं. जब हम प्लांट के डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो थोड़ी सी हम इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, राइट. फिर हम जो पब्लिक सेक्टर है, इनोवेशन, नो इनोवेशन, नो इंसेंटिव, right, to improve the product and all. That's good enough for my counter argument. मिक्स के अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ अबाउट द द प्रॉब्लम, तो मेरी नजर के अंदर द इशू दैट आई वुड टॉक अबाउट इज स्विच to mixed economy. So I would have an issue with that transition can be difficult. ओके, कि अगर आप पब्लिक सेक्टर पे हो तो कौन से एसेट्स को बेचने की जरूरत है ताकि वो प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाए. क्या नॉन एसेंशियल्स दें, क्या एसेंशियल्स दें. दैट इज अ ट्रिकी थिंग. That how will you be able to switch, right? There are a lot of problems in transition. फिर उसके बाद I guess even like uh, the extent of mix, that's a challenge. Extent of mix. इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई देखो, दुनिया के अंदर अगर 160 190 मुल्क हैं, तो वो कितने मिक्स्ड हैं. बेसिकली मेजोरिटी तो मिक्स्ड ही है. अब वो ज्यादा टूवर्ड फ्री मार्केट है कि या वो ज्यादा टूवर्ड कमांड साइड है, लेकिन है तो मिक्स सारे. ठीक. तो ये एक स्पेक्ट्रम है, उसके ऊपर आप देख रहे हो कि किस हद तक जो मिक्स है, किस हद तक इवन लाइक
to what extent of government intervention, किस हद तक गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, because that is where the problem comes. I think this one is a much better counter to the mixed economy and the challenge of mixed economy. And then you're going to have a final evaluation where you're going to talk about that in evaluation, planned economic system have plenty of advantages and disadvantages, like it can provide public goods and merit goods. However, the resources are inefficiently used and there's no incentive for innovation. So therefore, mixed economic system is a much better option, because उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है जो कंपटीशन भी करता है, क्वालिटी भी बनाता है, इनोवेशन भी करता है, while the government can also intervene and provide the shortfalls of the free market, which is they can ban the demerit goods, they can provide directly or indirectly provide the merit goods, and can do direct provision of public goods, right? So in conclusion, mixed economic system is good. So all right, all economic systems should switch to a mixed economy. अगर तुम ये वाला direct stance नहीं भी ले रहे हो ना कि all वाला नहीं होना चाहिए, तो you can, it's not necessary. But mix की तरफ eventually जाना ही पड़ेगा. Even country like China eventually for a great improvement, even they had to do that, right? तो ये आपको पता है standard का answer है. That's how we go about it. Moving on, इसके बाद जो question है, I feel that this question has been dealt also a few times. With the help of a formula, explain what is meant by income elasticity of demand for a product. 3 मार्क के लिए income elasticity of demand for a product की बात करनी है. Obviously, सबसे पहले आपको income elasticity को define कर लेना चाहिए. It measures the responsiveness in quantity demanded due to change in income. Formula is the percentage change in quantity demanded over the percentage change in income. Don't make that mistake and write a P over there. Pre का mark चला जाएगा. फिर उसके बाद I feel we should talk about just very briefly elastic and inelastic, right? What do they mean? सही है, तो मेरी नजर के अंदर 3 मार्क आपके यहाँ पे पूरे हो जाते हैं. There is not much. Oh, sorry, my bad. इससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगर प्लस है तो ये एक नॉर्मल गुड की सिग्निफिकेशन है, और अगर नेगेटिव है तो ये इंफीरियर. आई थिंक दिस ट्रम्प द इलास्टिक. तो मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ, 2 सेकंड लगेंगे. 3 मार्क आसान चीज से उठाओ, एक फॉर्मूला लिखो, ठीक है. For clear and accurate knowledge and explanation of what is meant by YED, वही हमारी definition, including the difference between elastic and inelastic. Oh my. तो ये normal inferior का discussion है, यहाँ तक तो नहीं आया, लेकिन elastic inelastic का तो like I said, write कर लो. You never know कौन सा कब hit हो जाए. फिर उसके बाद they say consider the extent to which demand for the product is always rise at the same rate as the income of the consumers. Yeah, I guess this is where that discussion comes. So, uh, so this is what we will do before even answering. So, a student has a question on what is elastic and inelastic. Since हमारी elasticity के topic के अंदर we've been talking about the idea कि देखें जी, जब भी कोई वेरिएबल चेंज होता है, अब वो y है कि p है कि दूसरे गुड की प्राइस है, क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर, दैट्स कमिंग इन पार्ट बी. वाई डी इलास्टिक का मतलब क्या है कि जब इनकम में चेंज आया तो डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आ गया. मीनिंग कि मेरी तनख्वाह 10% बढ़ती है और मेरी एक सर्टेन टाइप ऑफ गुड के लिए जो डिमांड है वो 20% बढ़ जाती है, राइट? So this would be considered an elastic because it created a much larger impact on the demand for the good.
लेकिन दूसरे एंड के ऊपर ये भी हो सकता है कि जब मेरी इनकम के अंदर इजाफा आया तो देर इज अ स्मॉल परसेंटेज चेंज इन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। 10% इनकम, मेरी इनकम बढ़ी है, लेकिन जो डिमांड है वो सिर्फ 5% से बढ़ी है फॉर दैट गुड। That would be considered inelastic. That means there is a relatively smaller change because that is what elasticity means. अब वो जो बात है that consider the extent to which demand for a good will always rise, बात क्या कह रहे हैं, at the same rate, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या डिमांड फॉर द गुड्स विल always rise? Well, if the goods are normal, yes, they will always rise. और नॉर्मल का मतलब क्या है कि जो गुड्स है उसकी जो YED की वैल्यू है वो प्लस है, so you will write that if the sign of YED is positive, that means it's a normal good. Okay, that means it's a normal good. When income goes up and the demand for the good goes up, and when income goes down and the demand for the good goes down, is considered a normal good. However, with some goods, when income rises, the quantity demanded falls, right? These goods are considered inferior goods, okay? And in case of inferior goods, the YED will have a sign of negative. मेरी नजर में तो यहाँ पे इलास्टिक इन इलास्टिक का तो असल यूसेज इधर है। When they say consider the extent to which the demand for the product will always rise at the same rate, अब ये बात ये हो गई कि भाई साहब, इफ इनकम गोज अप द डिमांड गोज अप, लेकिन अगर ये गुड की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो जो डिमांड में चेंज आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा कंपेयर टू द इनकम। लेकिन अगर वो इन इलास्टिक है तो जो क्वांटिटी चेंज है वो कम आएगा। ठीक हो गया? So that is how I would actually factor this in. ठीक हो गया? So I hope that it makes sense to you. यूनिटरी इज नो नीडेड टू बी डिस्कस्ड। यूनिटरी को तुम सिर्फ उस केस में डिस्कस करोगे जब वो यूनिटरी क्वेश्चन में लिखेंगे, अदरवाइज इलास्टिक इन इलास्टिक इज गुड इनफ। Here you make your final evaluative statement. Consider the extent to which demand for a product will always rise at the same rate. So in evaluation, when income increases, the demand for normal good rises and the rate of change depends on the elasticity. However, in case of inelastic good where the YED is negative, uh, the demand for the product will not change by the same rate। सही है? तो दैट मीन्स मैंने उस ऑलवेज को टारगेट किया और मैंने उसको बता दिया। therefore in conclusion, using YED, the demand for the goods will not always rise at the same rate as the income of its consumers, right? So that will like sort of conclude our question। बहुत ही सिंपल सा है, वही नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की हमारी इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, बार बार वही चीज हो रही है। तो प्लीज 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 इन चीजों को पक्का करो थ्रू दिस एसेस, मैक्सिमम मार्क्स उठाओ। you know you don't even need to get 50% marks and you can get an A, right? So just get knowledge, understanding, and chota mota analysis, and you'll be fine. Worst case scenario. Otherwise, those who want to target a distinction, please make sure that you throw all information possible. Assess the extent to which price elasticity of supply or cross elasticity of demand is more useful to a business. So we want to closely see कि to the business की बात की है, PES की बात की है और क्रॉस इलास्टिसिटी की बात की है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। Maybe, maybe not, you might get the mark for it or not,
सिंपल सा पीईएस को डिफाइन कर दो ब्रीफली। मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। फिर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस in quantity demanded for good A due to change in the price of good B। फॉर्मूला भी लिख लो, एंड फॉर्मूला डाल दो, बस, इससे ज्यादा नहीं। फिर पीईएस की नॉलेज किस तरह से यूज हो सकती है? तो फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू रियलाइज ओवर हियर इज कि देखें जी, पीईएस बेसिकली आपको ये बताता है कि जब प्राइस ऑफ द गुड चेंजेस तो आप कितने क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ क्विकली कैन यू रिस्पॉन्ड टू मे बी द चेंजेस इन डिमांड? क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है, आपने क्या सीखा है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाती है, जब प्राइस ऊपर जाती है तो आर यू एबल टू इंक्रीज सप्लाई इजिली और नॉट? आई थिंक दैट फॉर अ बिजनेस दैट वुड बी अ वेरी important information. They can actually use this information to get the best out of a scenario. For example, in the case of Ruafza, all year round the demand is low. Near comes the Ramzan and the demand is going to skyrocket. आपको क्या पता है? आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट स्टोरेबल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने प्रोडक्ट के पूरे साल स्टॉक बिल्डिंग करेंगे क्योंकि इलास्टिक है ना। तो रूह अफ़ज़ा इज इलास्टिक, उसका पीईएस इज ग्रेटर देन वन। हाउ डू आई नो इट्स ग्रेटर देन वन? बिकॉज you can stock it, right? So there is sort of like availability and even like possibility to stock it up. तो उससे क्या होगा कि जब डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगी तो आप बहुत आराम से पीएस को आप इसको एक्सप्लेन करेंगे that when the percentage change in price goes up, the percentage change in quantity supplied goes up by a much greater amount. So the firms will be able to take advantage of that situation, and that is a very useful information. अगर उनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो स्टोर नहीं हो सकता, राइट, और उसकी कैपेसिटी कम है स्टोरेबल की, तो देन द फर्म विल नो कि ओके हमारा प्रोडक्ट स्टोर नहीं हो सकता, तो देन हम अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करें? क्या हम इन्वेस्ट करें इन चीजों के अंदर कि हम अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर सकें ड्यूरिंग गुड प्रॉफिट टाइम्स? तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स which are only available at particular season, or maybe they are produced in certain regions कि आप उसको दूसरे रीजन्स में सेल नहीं कर सकते हो, देयर इज जस्ट नो वे। तो आप क्या करते हैं? आर यू फिगर्ड आउट अ वे टू समहाउ स्टोर इट इन कैन्स? कैन्स में जब आप डालते हैं उसको काट के, जो भी आप प्रिजर्वेटिव डाल के उसको टिन कर लेते हैं, तो अब क्या होता है कि आप दूर रीजन्स में भी उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम और वरीज ऑफ देम गेटिंग खराब। एंड सेकेंडली आप उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा देते हैं while maintaining the quality and people can use it all over the year। इससे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? आप पूरे साल प्रोडक्ट बेच सकते हैं और प्राइस भी मेंटेन कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन इन पाकिस्तान व्हेन अ फ्रूट कम, सीजन का स्टार्ट होता है तो क्योंकि सप्लाई लिमिटेड होती है, प्राइसेस आर रियली हाई। फिर क्या होता है जब सीजन एंड होने वाला होता है तो द प्राइसेस फॉल रियली लो, राइट, और फिर सीजन खत्म हो जाता है तो आप पूरा साल नहीं बेचते हो। दैट इज सो अनसर्टन फॉर द फार्मर। इफ यू नो कि आपने इस साल प्रोड्यूस किया एक सर्टेन रेट पे, जितना बिका ठीक है बेच लो, उसके बाद बाकी आप डाल दो स्टोरेज के अंदर और फिर पूरे साल उसको एक रीजनेबल रेट के ऊपर बेचते रहे। इजंट दैट अ फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन? पीईएस के साथ ही इसका पूरा ताल्लुक है कि वेदर यू कैन स्टोर इट और नॉट। फिर पीईएस के साथ आपको ये भी एक अगर इंफॉर्मेशन है कि अगर पीईएस इज इलास्टिक, if you know that you have capacity available, capacity available, अगर आपके पास कैपेसिटी अवेलेबल है तो आपको पता है कि इवन इफ द डिमांड इंक्रीजेस, आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप जो है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करके
अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं, मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप पीईएस आपका लेस देन वन है, क्योंकि आप फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर आपको पता है जी कि अब अगर डिमांड बढ़ी और प्राइस बढ़ी, तो हम तो सप्लाई नहीं इंक्रीज कर सकेंगे, हम तो और मार्केट कैप्चर नहीं कर सकेंगे। सो लेट्स हैव अ प्लान। यू अंडरस्टैंड? आई हैव टॉक्ड अबाउट टू थिंग्स। प्लीज इसको पीईएस ग्रेटर देन वन और पीईएस लेस देन वन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स को लिखा करो। ठीक है? एक पॉइंट भी लिखोगे ना अच्छा, वेल एक्सप्लेन्ड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमको मार्क दे दूंगा। बिकॉज आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट वन ना, मेरा थॉट सबसे पहले गया है लिमिटेशन लिखी है कि नहीं लिखी है बच्चे ने अबाउट पीईएस। बिकॉज रिमेंबर, देयर आर प्रॉब्लम्स विद पीईएस। पीईएस is just an estimation. You cannot rely on this. There can be problems and it may change over the period of time. Because खास तौर पे, अब ये मैं थोड़ा सा एवेल्युएशन में जा रहा हूँ, बट जैसे एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर तो वेदर के हिसाब से पीएस वैरी करती है। तो मेरे पास इतना डेटा, इतनी एस्टिमेशन, इतनी अच्छी एक्यूरेट एस्टिमेशन जरूरी नहीं है कि हो। राइट? सो आई वोंट बी एबल टू मेक अ गुड जजमेंट ऑन दिस। जस्ट अ लिटिल एक्सप्लेनेशन क्वालिफाइज कि जी आपने मुझे दोनों साइड आंसर दे दिया है। आई विल गिव यू लेवल 2 अप टू 5 मार्क्स फॉर इट। लेवल 3 पे जाना है तो देर इज अनदर वन विच इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज मेंशन्ड। आपने उसको डिफाइन जरूर किया है, बट उसकी फंक्शनैलिटी बताना बहुत जरूरी है। तो जहां तक क्रॉस इलास्टिसिटी की बात है, क्रॉस इलास्टिसिटी आपको बेसिकली सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स के बीच में बात करता है। तो अगर आपकी एक्सीडी की वैल्यू प्लस है तो आपको पता है सब्स्टिट्यूट है, और नेगेटिव है तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट है। और आपको पता है कि अगर एक्सीडी ग्रेटर देन वन है तो दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और अगर एक्सीडी की वैल्यू लेस देन वन है तो आपको पता है ये वीक सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स है। अब एक बिजनेस के लिए ये इंफॉर्मेशन कैसे वैलिड है? भाई आपको पता है एज अ बिजनेस कि अगर आपका कंपटीशन इलास्टिक है और आपका जो कंपटीशन है वो अपनी प्राइस को रिड्यूस कर देता है, तो यू आर गोइंग टू टेक अ बिग हिट ऑन द डिमांड। So now you have to create a strategy against your rival firms where you can lower your price, you can increase marketing budget, try to innovate new product कि आपकी डिमांड सस्टेन करें, ब्रांडिंग के ऊपर आप काम करें। सेम एज आपको कॉम्प्लीमेंट का भी पता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट ने अपनी प्राइस कम कर दी और वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड राइज इन द डिमांड। तो यू शुड प्लान एक्सपेंशन, यू शुड इंक्रीज द डिमांड फॉर योर गुड्स। तो ये आपका यूजेज है। बट देन वंस आई सी कि हाँ जी बच्चे ने एक रीजनेबल मुझे सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीजनेबल पॉइंट बता दिया है, तो मैं वैसे ही तुमको लेवल 3 के ऊपर लेके चला जाऊंगा, अप टू 6 7 6 सोच रहा हूं मैं इस वक्त। अच्छा एक्सप्लेन किया है तो 7 भी दे दूंगा। लेकिन फुल मार्क्स के लिए तुमको लिमिटेशन देना जरूरी है। लिमिटेशन एक्सीडी के साथ इशू क्या है कि भाई एक तो जो आपने नंबर्स निकाले हैं अगेंस्ट द कंपेटिटर एंड द क्लाइंट, अगेंस्ट द कॉम्प्लीमेंट, एक तो मसला ये है कि भाई यू आर रिलाइंग ऑन राइवल एंड अदर बिजनेसेस। और मसला ये है कि उनके जो चेंजेस आएंगे या जो स्पीड है एट विच दे गोइंग टू मेक अ चेंज, वो बहुत वैरी करेगी। कि मतलब आपको ऑल ऑफ अ सडन पता लगता है जी टोयोटा हैज डिसाइडेड टू लोअर द प्राइस। अब उसका जो कंपटीशन है होंडा वगैरह, नाउ दे हैव टू लिव विद दैट रियलिटी कि अब हमारी कितने से डिमांड में चेंज आएगा। डेटा आउटडेटेड तो नहीं हो गया? ये बहुत क्विकली आउटडेटेड भी हो जाता है। तो हाउ मच कैन वी रिलाई कि कितनी डिमांड आएगी? भाई अगर कंपटीशन ने प्राइस बढ़ा दी तो हमारी डिमांड में जो इंक्रीज आएगा दैट्स फाइन आएगा, बट कितने से आएगा? बिकॉज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो गारंटी कर रहा है कि वो कैलकुलेट करके तुम्हें एग्जैक्ट टू द नंबर बता सकता है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा।
but that is not easy to predict. So there is a counter argument. I give you level 3 maximum marks for it if you write both sides briefly अच्छे से एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन बड़ी कर दो और काउंटर को थोड़ा सा कम भी कर दोगे तो एटलीस्ट मैं काउंट कर लूंगा। उसके बाद यू मेक योर एवेल्युएटिव स्टेटमेंट। एवेल्युएशन के अंदर भाई क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट कि बिजनेस के लिए यूजफुलनेस विच वन इज मोर यूजफुल, तो ये आपने आर्ग्यू करना है। तो भाई मैं ये कहूंगा इन एवेल्युएशन there are advantages of price elasticity of supply to the business, uh, as they can plan expansion and their production capacity and capabilities. However, there are limitations to that, as what limitations? That it's just an estimation and it can change, so we cannot completely rely on it. And cross velocity of demand also have its own strengths, and businesses can use it to make a decision based on their rivals' decision. However, this data can get very quickly outdated. ठीक है, ये इनके इंडिविजुअल्स थे। अब मैं इन दोनों का देखूंगा विच वन इज मोर। पीईएस जो है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फर्म इटसेल्फ, that they have a much better reading of PES, that when price increases, how much production can they do, because the production process is their own. So they can have a much more better estimation of the impact that will happen. But I can't say the same thing for YED. YED is much more dynamic and much more difficult to predict, right? So, उस point of view से, I would say that PES is more useful, and the firm can use it for planning their production process. ठीक है? But we cannot discount cross velocity also. दोनों की यूजेज है। इनफैक्ट मैं तो ये भी रेकमेंड कर सकता हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि सिर्फ ये दो इज नॉट इनफ, मे बी यू इवन नीड टू लुक एट YED. Alright, I've seen this happen a few times. So that would be जबरदस्त। ठीक। So then we have question number 4. Let's take a break for a second. It's the same. All right, let's go. So macroeconomics के अंदर you have 4A and 4B. Let's talk about this very quickly. पहला question है, explain 3 components of aggregate demand. If you don't know aggregate demand, you don't know macro. ठीक हो गया? Explain 3 components of aggregate demand. मेरी नजर में you should always first define what aggregate demand is. Aggregate demand is the total effective demand for goods and services in the economy. Uh, Aggregate demand is equals to C plus I plus G plus X minus M. उसमें से इन तीन के ऊपर आप छोटा सा मुझे हर चीज के ऊपर एक एक ब्रीफ दे देंगे for 1 mark each. If you want to talk about business investment in terms of the machinery that the businesses acquire or the stock building that they do, या फिर government spending के अंदर what the government is spending on goods and services, like on the merit goods and the public goods and running of the offices and all of that. C के अंदर you have the consumer expenditure on durable and non-durable goods to improve their living standards. You get it? And the second part here, consider the extent to which they may be increased without leading to inflation. There's no diagram, right? There is no diagram. आपको ये पता है कि जब AD बढ़ता है तो it actually creates demand pull inflation. So पहली चीज तो मैं ये बात करूंगा कि AD बढ़ने की वजह से if any of these component goes up and AD goes up, that creates demand pull inflation. Okay? Demand pull inflation. आई थिंक ये भी इन्होंने भी यही बात की होगी। लेट मी शो यू फॉर सेकंड। क्या कह रहे हैं भाई, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर 3 कंपोनेंट्स को समझा दो, किसी भी 3 कंपोनेंट्स को। एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स को आप एक साथ ही कंसिडर करो, एक्स और एम को सेपरेट नहीं करना। नोट list 3 components of AD, so any AO marks cannot be awarded for simply mentioning the components, right?
या सो बेसिकली जस्ट डोंट लिस्ट देम डाउन, डू योरसेल्फ अ फेवर। उसने लिखा एक्सप्लेन थ्री, सो यू हैव टू एक्सप्लेन देम। For an analysis that explains that one cause of inflation is situation where AD rises. Oh yeah, this thing. I saw this today in one of the students. I was so happy to see that. डिमांड पुल के इन्फ्लेशन के उसमें ना हमेशा हमेशा ये लिखा करो, एडी का जो राइज है वो एएफ से ज्यादा होगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी। इट्स अ मैंडेटरी थिंग फॉर यू टू डू। अंडरस्टूड? इस केस के अंदर जो मैंने ऊपर तुम्हें एक्सप्लेन किया और मैंने कहा एडी बढ़ने की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, मार्क नहीं मिलेगा। यू हैव टू से कि जो एडी का इंक्रीज है, वो एडी का जो इंक्रीज है, दैट एडी का इंक्रीज शुड बी ग्रेटर देन ए एस का इंक्रीज। यू अंडरस्टैंड दैट? दैट्स अ मस्ट थिंग एंड दैट्स व्हेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन विल अकर। बट विल दैट हैपन इन ऑल केसेस? तो आप वो याद होगा तुम्हें एल आर एस का कर्व, अगर तुम डायग्राम भी बना देते हो तो नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, बट यू हैव टू राइट अबाउट कैसे इन्फ्लेशन होगी और नहीं होगी। तो अगर एडी इस पॉइंट पे है जहां पे एल आर एस का कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, विच इज शोइंग दैट यू आर एट अंडर यूटिलाइजेशन की सिचुएशन। तो इफ यू आर एट अंडर यूटिलाइजिंग तो एडी बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप नियर पोटेंशियल हैं तो फिर इन्फ्लेशन के अंदर ऑब्वियसली इंक्रीज आएगा। यू अंडरस्टैंड दैट? वी टॉक्ड अबाउट दिस plenty of times before also, so make sure that you do those lectures that I have uploaded before also. But also consider why this may or may not occur. Example, the economy is operating at less than capacity. So some of the increase in AD also increases AS. So inflation nahi aayegi. Achha, they will even accept something like this. कि अगर these component increases and AD goes up, but because of some supply side reasons, अगर aggregate supply बढ़ जाता है तो inflation नहीं होगी। ठीक? तो ये दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो ये हमारा एल आर एस वाला डायग्राम भी एक्सेप्ट करेंगे और वो भी करेंगे। तो फाइनली रिमेंबर, यहाँ नोट दिया हुआ है, इन बोथ सिनेरियोज आर कंसिडर्ड देन फुल मार्क्स में बी अवॉर्डेड। वन साइडेड जो है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 1 मार्क, एनालिसिस का सिर्फ 1 मार्क दोगे अगर काउंटर नहीं हुआ। काउंटर के 2 मार्क रखें इस बार इन्होंने, तो काउंटर को प्लीज कोई बहुत हल्का नहीं लिया करो। हर चीज को एक्सप्लेन करो, इमेजिन करो। एग्जामिनर को इकोनॉमिक्स आती ही नहीं है, तुमने सिखानी है उसको इकोनॉमिक्स। उस डिटेल के साथ तुम्हारा राइटअप होगा। Finally, your evaluation, the extent to which they may be increased without inflation. So, हमने in evaluation, an increase in aggregate demand may or may not increase inflation. It depends on the level of capacity utilization or the combination of AD and AS. हाउ विल यू काउंटर फॉर 2 मार्क्स? ये जो मैं पूरा बता रहा हूँ कि एडी बढ़ेगा, लेकिन अगर आपके पास एक्सेस कैपेसिटी होगी तो इन्फ्लेशन नहीं इंक्रीज होगी, और अगर आप फुल कैपेसिटी पे हो और एडी बढ़ता है तो फिर होगी। ये 2 मार्क के लिए है ये डिस्कशन जो अभी हमने किया। ठीक, दैट्स योर काउंटर फॉर इट। या इवन इफ यू डू के एडी का जो राइज है वो जितने से हुआ है उससे काफी ज्यादा एएस में राइज हो गया, यू कैन डू द डायग्राम फॉर दैट एंड इवन लाइक सपोर्ट दैट व्यू। ठीक है, इजी है। 4B के ऊपर आते हैं। द चाइनीज गवर्नमेंट हैज री एम्फसाइज इट्स commitment to rebalancing the economy from focus mainly on investment and export to one aiming to increase the proportion spent on domestic consumption. So assess the extent to which it is possible to achieve this by fiscal policy alone. ये चाइनीज गवर्नमेंट की सिचुएशन हो रही है। अब ये पेपर बना है 24 के अंदर, राइट? 24 का पेपर है, बना है 23-22 के अंदर, एंड ऑफ 22 और अर्ली 23। अब उस वक्त तो ट्रम्प और टैरिफ की बात ही नहीं थी। इनफैक्ट उससे पहले बल्कि चाइनीज हैव बीन ट्राइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम फॉर द वेरी लॉन्गेस्ट टाइम, कि वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। दे आर ऑलवेज रिलाइंग कि ये चीजें करेंगे तो जी हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन तो है ही नहीं। अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ, दिस हैज गिवन देम अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी
कि भाई वहां तो कम जाएगा प्रोडक्ट, तो जो जरूरत के प्रोडक्ट हैं वो बाहर जाएंगे, और बाकी प्रोडक्ट्स जो है, जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, हम उसको लोकल इकोनॉमी के अंदर उसको यूज करेंगे, उसको डाइवर्ट कर देंगे टूवर्ड्स द लोकल इकोनॉमी। तो उसके लिए दे आर आस्किंग, assess the extent to which it could be possible to achieve this by fiscal policy alone। ठीक है, तो दे बेगिंग द क्वेश्चन कि कैन इट बी डन। तो मेरी नजर के अंदर, मेरे ख्याल के अंदर, फिस्कल पॉलिसी को पहले तुमने समझाना है, और एंड इट्स अ मस्ट कि तुम्हें एक कोई ना कोई ऑल्टरनेट पॉलिसी को भी सजेस्ट करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे बाय डिफाइनिंग द टर्म फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो चीजें होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन को आप फैक्टर इन करते हैं। In this scenario where we want the goods to basically domestic consumption को हमने बढ़ाना है, तो basically what we're looking for is an expansionary fiscal policy. When we're doing an expansionary fiscal policy, we are proposing that let's do government spending in our local economy and reduce the taxes also. Okay? तो जब आप ये करेंगे, तो टैक्सेस के अंदर आपने इनकम टैक्स को कम कर दिया। जब आपने इनकम टैक्स को कम किया तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। राइट, सो अगर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, तो वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, लोकल भी गुड्स ज्यादा खरीदेंगे, तो आपको ज्यादा एक्सपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चीजों के ऊपर स्पेंडिंग करेगी, तो उसकी वजह से भी नए बिजनेसेस भी लगेंगे। वो भी स्टील, सीमेंट और गुड्स एंड सर्विसेज और फर्नीचर, इन सब चीजों की डिमांड करेंगे, तो लोकल इकोनॉमी भी इंप्रूव करेगी। ठीक। बट नाउ वी वांट टू डू अ काउंटर आर्ग्यूमेंट कि फिस्कल पॉलिसी में तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं। फिस्कल पॉलिसी के अंदर यहाँ पे आप एक बहुत ही बड़ा काम अपने सर पे लेना चाह रहे हैं कि आप इसको बड़े ही एक तरीके से इसको डाइवर्ट करें। तो मेरी नजर के अंदर फिस्कल पॉलिसी की जहां बात आती है, एक तो देर इज अ टाइम लैग का इशू इन फिस्कल पॉलिसी, कि जब बाय द टाइम यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यू मेक द पॉलिसी, यू इम्प्लीमेंट। और फिर उसके बाद अनसर्टेनिटी भी एक बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हाउ विल पीपल रिस्पॉन्ड। भाई लोगों की खर्चा करने की आदत ही नहीं है, अब आप उनसे कह रहे हैं कि खर्चे करें, चीजें खरीदें, लिविंग स्टैंडर्ड्स अपने इंप्रूव करें। लोग तो उसी तरीके से रहते हैं जैसे वो रहते हुए आए हैं। So there is an uncertainty of how this is going to have an impact on the overall economy. Do you follow? तो ये है। But obviously you have in your mind your, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई ये अलोन का वर्ड इधर आया हुआ है। Assess the extent to which it could be achieved to possible, sorry, it would be possible to achieve this by fiscal policy alone. So try to understand by saying this, they're actually begging the question to make a comparison। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि यार सिर्फ यही करनी चाहिए, तो जब तक मैं ऑल्टरनेट को नहीं करूंगा, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूं कि हाँ जी इसी को ही करो। राइट, आई नीड टू टॉक अबाउट एन ऑल्टरनेटिव टू देन से कि यार फिस्कल पॉलिसी अलोन ही काफी है, क्योंकि बाकी नहीं, कोई खास सीन नहीं है उसका। You understand that? This is what I'm saying over here, कि अलोन इज एक्चुअली बेगिंग कि भाई पहले कंपेयर तो करो किसी के साथ, और फिर बोलो कि हाँ जी ये फिस्कल पॉलिसी से हो जाएगा अकेले कि नहीं होगा। ठीक। तो अगर नहीं समझ आया दिस पार्ट, देखें जी फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। फिस्कल पॉलिसी होती है व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड्स ऑन सर्टेन स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसी। पॉलिसी पार्लियामेंट में जाती है, पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होती है, फिर पार्लियामेंट इसको अप्रूव करता है, आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वरना तो ये वही बात हो जाएगी कि सुबह प्राइम मिनिस्टर ने बोला यार टैक्स कम करने की जरूरत है, आपने रात तक टैक्स कम कर दिए, अगले दिन पार्लियामेंट में शोर मचा, आपने बोला सबर सबर अभी नहीं टैक्स बढ़ा सकते, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। तो दैट्स अ टाइम लैग, इट टेक्स टाइम फॉर दीज थिंग्स टू हैपन। कितना टैक्स लगाना है, कितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करनी है, सस्टेनेबल, जबरदस्त अल्फाज यूज किया मार्किंग स्कीम में, सस्टेनेबल तरीका क्या है विदाउट मेसिंग द होल थिंग अप। राइट, तो ये हो गया। फिर आपने काउंटर करना है भाई,
काउंटर में तुम चाहो तो तुम मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस कर सकते हो, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर आप कहते हैं जी मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी। आप कहते हैं जी एडी बढ़ाने की जरूरत है, दैट्स द आइडिया, सो यू विल आल्सो गो फॉर एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आप जो है मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे और आप जो है इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, एंड यू गोइंग टू होप कि भाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गिरने की वजह से बोरोइंग बढ़ेगी, और जब बोरोइंग बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगी और एडी बढ़ेगा, तो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी, जस्ट लाइक फिस्कल पॉलिसी बाय द वे, बट देयर इज अ डिफरेंस, राइट? अब यहाँ पे भी देयर इज अ टाइम लैग का इशू। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो आप फौरन से एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो क्या है, एमपीसी की मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर वो बोल देंगे भाई कल 1% हमने इंटरेस्ट रेट गिरा दिया। अब जो बिजनेसेस हैं वो इसको फैक्टर इन करने में टाइम लगाते हैं, बट वन थिंग आई कैन से इज दैट दिस टेक्स लेस टाइम कंपेयर टू द फिस्कल पॉलिसी, दिस टेक्स मोर टाइम। अप्रूवल इफेक्ट आने में इसके ऊपर टाइम ज्यादा लगता है, दैट वुड बी लाइक माय कंपैरिजन विद दैम। अगेन इसके अंदर भी मनी सप्लाई आपने बढ़ा दी और इंटरेस्ट रेट कम कर दी, इसमें भी अनसर्टेनिटी का इशू है कि लोग आके पैसे बोरो करेंगे, बिजनेसेस इतना अपने आप को सिक्योर फील करेंगे कि वो एक्सपेंशन करें, राइट? अगर इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बहुत लो के ऊपर हैं तो हो सकता है बोरोइंग और एक्सपेंशन हो ही ना। इसको आप कहते हो लिक्विडिटी ट्रैप, ये वैसे तो A2 में हम डिस्कस करते हैं, but this is called a liquidity trap where the interest rate is already at a very low level and we don't know about it. फिर मार्किंग स्कीम के अंदर ओके, सो दे सेड they've done a supply side policy का also. I've talked about supply side policy many times, right? Supply side policy is about government expenditure on educating people and training them so that they can get high salary income jobs, and then they can buy domestic goods and services. Zabardast works, राइट? उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, डीरेगुलेशन करेंगे, नए बिजनेसेस आएंगे, कंपटीशन आएगा, नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, तो अगेन गुड्स की सेल बढ़ेगी, फैंटास्टिक, जबरदस्त। बट द काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? लॉन्ग रन में इफेक्टिव है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी रिक्वायर्ड, राइट? Encouragement to the businesses will be required, maybe they might not respond as quickly. तो एक तो सप्लाई साइड में एक कॉस्ट का इशू है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इशू है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लॉन्ग रन में ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है? एंड देन यू आर गोइंग टू मेक योर इवेल्युएशन। अलोन इज इट इनफ? अलोन इज नेवर इनफ, यू शुड हैव अ combination. So for a full evaluation or more than one type of policy that clearly assesses and compares the potential usefulness of them to rebalance the Chinese economy, leading to a valid conclusion. You understand? अगर तुमने दोनों साइड और ऑल्टरनेटिव पॉलिसी डिस्कस नहीं की, मैं तुम्हारे 4 मार्क खा जाऊंगा। सिंपल एज दैट, दैट्स इजीएस्ट 4 मार्क्स। मैं तुमको एज एग्जामिनर बता रहा हूँ, इवैल्यूएशंस आर डिफिकल्ट टू चेक। अंडरस्टूड? पुट द एग्जामिनर इन दैट पोजिशन वेयर तुम इवैल्यूएशन को लिखो। ठीक है? किस तरह से लिखो? पहले अपने एनालिसिस को डेफिनेटली ऐसे लिखो कि तुम्हारा नीचे काउंटर हो रहा हो। इवैल्यूएशन के अंदर चाइना को फिट इन करो, बिल्कुल करो, इट इज अ प्रॉब्लम। तुम्हारी इवैल्यूएशन, जब तुम इवैल्यूएशन कर रहे हो, इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि इस थ्योरी को देखते हुए ये जो मसला हमने बताया है, इस मसले का हल हमने निकालना है, तो प्लीज उस मसले को या उस कंट्री को, उस चीज को जरूर 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 डिस्कस करो। इफ यू डोंट डू इट, यू डोंट गेट द मार्क फॉर इवैल्यूएशन। It is mandatory for you to use whatever is given, whatever circumstance is given, for you to integrate. अगर फॉर एग्जाम्पल चाइना नहीं लिखा होता और कोई डेवलप्ड इकोनॉमी का वर्ड यूज हुआ होता, हाई इनकम कंट्री का वर्ड यूज हुआ होता, लो इनकम कंट्री का वर्ड यूज हुआ होता,
तो तुम्हें अपने इवन एनालिसिस के अंदर यू शुड फैक्टर इट इन। ठीक है, मैं तो तुमको थ्योरी जरूर बताती है, बट यू नीड टू फैक्टर दोस इंफॉर्मेशन इन। ओके जी, मूविंग ऑन। फिर हम फर्दर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जबरदस्त सवाल है ये। आखिरी सवाल है। क्वेश्चन 5 के अंदर कह रहे हैं एक्सप्लेन 3 कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई 3 कॉजेज बता दो, बहुत ही आसान है। दो, एक एक मार्क के लिए तीनों कॉजेज बता दो। वही 3 है हमारे, कौन कौन से भाई? यू हैव द स्ट्रक्चरल, यू हैव द फ्रिक्शनल। थोड़ी सी मैं वो कर रहा हूँ, आगे ऊपर नीचे कर रहा हूँ। यूजली आई ऑलवेज स्टार्ट विद लो इंटेंसिटी टू हाई इंटेंसिटी, राइट? तो लो इंटेंसिटी के अंदर यू शुड ऑलवेज पुट इन, सॉरी मुझे हटाने दो ना। फ्रिक्शनल इज लो इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल एक तो लॉन्ग टर्म नहीं होती और कम लोगों को अफेक्ट करती है। स्ट्रक्चरल थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए होती है, ज्यादा लोगों को अफेक्ट करती है, इंडस्ट्री, रीजन। फिर फिर उसके बाद यू हैव द cyclical. This is long term and this affects majority of the people. ठीक है? So 3 types of unemployment, these are your major 3 types. You don't need to go into the further के frictional के अंदर तुम मुझे casual से seasonal और ये सब समझाने लगे हो। Maybe in the longer essay you can do that. अभी ये 3 के लिए ये 3 main है। And consider which type is likely to be the most damaging to a high income economy. So अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने तुमको वैसे तो बता दिया कि स्मॉल और लीस्ट जो ट्रबलसम है वो फ्रिक्शनल है। वो लीस्ट क्यों है? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, राइट? दिस इज शॉर्ट टर्म, अफेक्ट फ्यू। दिस इज लॉन्ग टर्म, अफेक्ट मैनी। हाई इनकम कंट्रीज के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? हाई इनकम कंट्रीज के अंदर you do have recessions and you do have economic booms, but डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी बहुत बहुत आते हैं। ठीक है? तो मैं अपनी इवैल्यूएशन के अंदर, इवैल्यूएशन कह रहा हूँ बट सॉरी, मेरी एक्सप्लेनेशन के अंदर हाई इनकम इकोनॉमीज के अंदर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है यूजली वो होती है इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। तो हाई इनकम कंट्रीज के अंदर यूजली इतना ज़्यादा इशू होता नहीं है इसके ऊपर। तो मैं फ्रिक्शनल का समझा रहा हूँ कि फ्रिक्शनल होती क्यों है, और फ्रिक्शनल इतना बड़ा प्रॉब्लम मेरी नज़र में तो नहीं है। स्ट्रक्चरल जो है वो थोड़ा सा परमानेंट प्रॉब्लम है और डिफिकल्ट टू सॉल्व है। आपका पूरा एआई आया, उसने पूरी पूरी इंडस्ट्री उड़ा दी आपकी, राइट? एक जॉब की पूरी पूरी लेयर उड़ा दी। अब वो जॉब गई परमानेंटली खत्म, इंडस्ट्री इज गॉन। प्राइमरी से आप सेकेंडरी की तरफ चले गए, माइनिंग बंद। अब वो जो माइनर है उसकी परमानेंटली जॉब चली गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको वर्कर्स को रिट्रेन वगैरह करना पड़ता है। तो इट्स अ प्रॉब्लमैटिक वन। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की जहां तक बात आती है, आपको पता ही है इकोनॉमिक साइकिल्स की वजह से, रिसेशन की वजह से, डाउनवर्ड साइकिल की वजह से। और इसको आपने उठाने के लिए आप एक्सपेंशनरी पॉलिसीज यूज करते हैं। ये लॉन्ग टर्म होती है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करती है। तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो मेरी नज़र में तो दोनों स्ट्रक्चरल और सिक्लिकल डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए दोनों प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है? लेकिन मेरी नज़र में स्ट्रक्चरल एक परमानेंट खत्म है। सिक्लिकल के अंदर आपको पता है जब इकोनॉमिक साइकिल इंप्रूव होगी तो ये मसला हल हो जाएगा, राइट? बिकॉज डेवलप हाई इनकम कंट्रीज में ये नहीं होता कि बस रिसेशन आया तो वो रिसेशन ही है, द इकोनॉमीज डू कम बैक आउट। लेकिन जो नौकरियां गई हैं ना वो गई। लेकिन ये अच्छी बात है कि हाई इनकम इकोनॉमीज के अंदर
वोकेशनल ट्रेनिंग्स और इस तरह की ऑल्टरनेट ट्रेनिंग ज़रूर होती है। इदारे होते हैं जो लोग अपने आप को रीट्रेन करके थोड़ा सा वापस से इंटीग्रेट हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर, राइट। तो दिस इज द टाइप ऑफ एन आंसर दैट वी नीड, कि पहले तीन टाइप्स को तुमने एक्सप्लेन किया कि ये क्या होती है, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर एक फर्दर एनालिसिस किया कि वो डैमेजिंग, हाई इनकम के अंदर डैमेजिंग कैसे हो सकती हैं, ठीक है। और फिर एवेल्युएशन के अंदर यू टॉक अबाउट कि इन सब में से मोर डैमेजिंग कौन सी है। मेरे पास उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, एंड इट्स नॉट ऑलवेज अ गारंटी कि तुम्हारे पास एक पक्का आंसर होगा इसका। ठीक हो गया। Let me go to the last one now. Assess which expansionary monetary policy would be most likely to enable a government to meet its economic objectives of a low rate of unemployment. Which macroeconomic expansionary policy? Macroeconomic expansionary policy, पांच पॉलिसियां हैं जो आपके पास हैं बेसिकली, मेजर मेजर। और भी ज्यादा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन पांच मेजर है। Expansionary fiscal policy, where government spending goes up, taxation goes down, aggregate demand increases, employment goes up. Understood? Monetary policy, money supply reduces, money supply increase, interest rate reduce, borrowing होगी, aggregate demand बढ़ेगा. All right, excellent. Then you have the supply side policy. Supply side policy के अंदर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड ऑल, आप वो करेंगे। दो मैं लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ, एक तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, और दूसरा ट्रेड यूनियन रिफॉर्म। आप ये दो करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, राइट, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल आउटपुट बढ़ेगा, राइट। तो ये हमारे पास तीन पॉलिसीज हैं, उसके तीन इम्पैक्ट हैं। मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। Analysis must focus on the advantages and disadvantages of using at least two expansionary policy to keep unemployment. For example, expansionary supply side policy emphasizes on training and education. It will allow people to become employable because they have good skills. However, वही बात, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, लंबी करना थोड़ा सा इसके ऊपर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ऑल, लॉन्ग रन में इफेक्टिव। This chosen policy must be contrasted with an alternative policy. For example, expansionary monetary policy may be suggested with low interest rate, investment आएंगी, boost employment, and so उसकी वजह से improvement आएगा। लेकिन counter argument, कि काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है कि भाई जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर वो मशीन की तरफ इन्वेस्टमेंट जाएंगी तो लेबर तो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, तो ये तो एक नुकसान की बात हो गई है। काउंटर आर्ग्यूमेंट इज अ मस्ट, यू सी, doing the same thing over and over again. We've done quite a lot of essays by now if you go into the playlist in the YouTube, right? But it's the same pattern repeating itself. Repetition, repetition, repetition. Then for your evaluation, एक दफा फिर मैं चला जाता हूँ, ट्रिगर वर्ड देख लेते हैं। ट्रिगर वर्ड इज मोस्ट लाइकली टू इनेबल द गवर्नमेंट टू मीट इट्स लो रेट का ऑब्जेक्टिव। तो भाई आ, दो पॉलिसी जो तुमने लिखी है उसका एक छोटा सा इंट्रो करना पहले। इन एवेल्युएशन, द सप्लाई साइड पॉलिसी की वजह से किस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है और नहीं बढ़ सकती है, बट एट द सेम टाइम जब आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करोगे तो उसके अंदर भी तुमने हाउ इट विल वर्क एडी बढ़ाने में, एंड हाउ इट विल नॉट वर्क। तो सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि सप्लाई साइड पॉलिसी में जब बिजनेसेस इन्वेस्ट करती हैं तो भाई वो इन्वेस्ट करती हैं फैक्ट्रीज में, मशीन्स के अंदर, तो वो लेबर को थोड़ा सा काउंटर करती है ना। तो मे बी नॉट, मे बी दे जस्ट नीड द स्किल्ड वर्क फोर्सेज, राइट। So that is the argument that needs to be made over there.
फिर फाइनल मोस्ट लाइकली टू मीट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विच पॉलिसी। मेरा ख्याल में सप्लाई साइड थोड़ी लॉन्ग रन में ज़्यादा इफेक्टिव है, एंड डिमांड साइड पॉलिसी जो है वो शॉर्ट रन में ज़्यादा इफेक्टिव है। आई वुड से अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, वेयर एज लॉन्ग रन के लिए मेरी नज़र में सप्लाई साइड इज मोर इफेक्टिव। बट ऑल्सो रिमेंबर, एंड वी रिपीटेड दिस सो मैनी टाइम, कि सप्लाई साइड पॉलिसी जब तुम करने जाते हो लाइक एजुकेशन और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट, तो आज यू स्पेंड मनी ऑन दीज थिंग्स ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग गोज अप, तो उसकी वजह से शॉर्ट रन में एडी बढ़ जाता है, तो वो शॉर्ट रन में भी इंप्लॉयमेंट करेगा, और लॉन्ग रन में जब एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगा टू द राइट, तो वो भी मसले का हल निकाल देगा, लॉन्ग रन में और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो यू नो आई कुड से कि macroeconomic policies, a mixed combination of all policies would be a much more desirable thing. You understand that? This is how I'm doing this essay, and that's it.